Today's lecture is about population and feedback system. We are going to study in this lecture that how different feedback systems affect the population या population जो है वो कैसे behave करती है in the present of different feedback system. So इस lecture में पहले हम देखेंगे कि जी feedback systems क्या होते हैं, कौन सी टाइप्स है फीडबैक सिस्टम्स की, और फिर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ उनको समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे दैट हाउ दीज फीडबैक सिस्टम एंड रिलेशन ऑफ द पॉपुलेशन act within an ecosystem. We all live, we all human beings, we live in an environmental system, and history has witnessed it so many times that some environmental problems occurs or appear so suddenly that the human kind or the mankind was unable to even comprehend that why this happened. One of the recent example we all went through in recent past through this pandemic of this coronavirus, and this happened so suddenly. It appeared so suddenly that the whole world was not ready for that, और उसके हम सब ने उसके adverse effect देखे और हमने देखा कि कैसे पूरी दुनिया जो है एकदम स्टैंड स्टिल पे आ गई, सारे systems रुक गए, and there was a fear and there was a lot of deaths and there was so many negative disasters happening all around the globe. So ये क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डेवलपमेंट इन साइंसेस, प्रेडिक्टिव मॉडल्स और बाकी सारा कुछ होने के बावजूद व्हाई दिस हैपेंड, क्या एक जरा बराबर भी हमें इंडिकेशन नहीं थी ह्यूमन मैनकाइंड को कि दिस इज समथिंग विच विल बी हैपनिंग वेरी सून और दिस इज समथिंग विच इज अराउंड द कॉर्नर. तो अब हम guess ही नहीं कर सके. So this is a one big question that need to be answered. ये जो question है, why do environmental problems sometimes appear so suddenly? Uh, the answer to this, it lies within a positive and a negative feedback system, or positive and negative feedback, powerful forces that shape the behavior of all biological system, starting from cell to the social system and the ecosystem. Feedback is the effect that change in one part of an ecosystem or a social system has on the very same part after passing through a chain of effects in the other part of a system. दो तरह के systems हैं, and positive and negative feedback system. In order to understand कि जो feedback system क्या होता है, one of the most easy to understand example is जो हमारी body का temperature है. अगर हमारी body का temperature जो है, if it decreases, तो within हमारी body के अंदर there is a mechanism जो कि ऑटोमेटिकली हीट जनरेशन की अटेम्प्ट करनी शुरू कर देता है. और वो मैकेनिज्म क्या है कि हमारा जिस्म कांपना शुरू होता है. जब कांपना शुरू होता है तो मसल्स जो है वो मूव करते हैं, मसल मूव करते हैं तो वो हीट जनरेट करते हैं और उससे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है. सो बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, हमारा जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसने हमारी बॉडी में शिवरिंग जो है वो शुरू कर दी. उस शिवरिंग की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और हीट जो है वो बॉडी दोबारा अपनी नॉर्मल हीट जो है उसको अटेन कर लेती है. दूसरी साइड पे अगर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाए तो एक कूलिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है. और वो कूलिंग का प्रोसेस क्या है, वी स्टार्ट स्वेटिंग, हमें पसीना आना शुरू होता है, बॉडी अब स्किन के ऊपर मॉइस्चर जो है वो अपीयर होता है. वो मॉइस्चर जब एवेपोरेट करता है तो वो अपने साथ बॉडी की हीट को भी लेके जाता है, तो एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है. सो ये दिस इज अ वन सिंपल एग्जांपल ऑफ फीडबैक सिस्टम. तो ये जो फीडबैक सिस्टम है बेसिकली एक चेंज के नतीजे में दूसरा कोई सिस्टम जो है वो या कोई दूसरी चेंज का कोई दूसरी कोई भी प्रोसेस इनिशिएट होता है. और बेसिकली ये जो फीडबैक सिस्टम्स होते हैं, दिस
these are to provide the stability within the system. जो नॉर्मल कन्वेंशन है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, वो ये कहती है कि नेगेटिव फीडबैक जो है दिस इज टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी एंड ऑल इकोसिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम। हम सब एक सोशल सिस्टम के अंदर रहते हैं, हमारा एक अपना इकोसिस्टम है, और ऑल इकोसिस्टम्स एंड सोशल सिस्टम्स हैव hundreds of feedback loops. Those keep every part of the system within the bounds or the boundaries necessary for the whole system to continue functioning properly. यानी कि एक बड़ा सिस्टम जो है उसके अंदर छोटे छोटे सिस्टम्स हो सकते हैं, और उन छोटे छोटे सिस्टम्स के अपने फीडबैक लूप्स हैं जो कि उन सिस्टम्स को बैलेंस में रखते हैं। और जो दूसरा नॉर्म या कन्वेंशन है वो ये है कि पॉजिटिव फीडबैक स्टिमुलेट चेंज, और पॉजिटिव फीडबैक जो है इट्स ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सडन अपीयरेंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड मैनी अदर रैपिड चेंजेस इन द वर्ल्ड अराउंड अस। इसका मतलब है कि जो कोरोना की सडन अपीयरेंस हुई, जो पैंडेमिक आउटब्रेक हुआ, तो वहां पे कोई पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है वो काम कर रहा था। आगे अभी फर्दर चलते हैं तो हम इसमें देखेंगे कि ये फीडबैक सिस्टम्स होते क्या हैं, इनको कैसे हम रिलेट कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ और अपनी जो पॉपुलेशन है उसके साथ। अब कोई भी इकोसिस्टम जो है ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी होती है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, एंड कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ different species of plant, animals, microorganisms, and etc. etc. Or we as a human being, we interact directly or indirectly with the different population whenever we interact with certain ecosystems. So अब हमें we need to understand how these positive feedback cause population to increase rapidly, or when there is a lot of sources available. And also we are going to learn uh, that how negative feedback system जो है वो restrain करते हैं population of every species within a biological community within the limits जो कि कोई भी ecosystem जो है वो support कर सकता है। इसका मतलब है कि एक इकोसिस्टम की एक सर्टेन लिमिट होती है, और उन लिमिट्स के अंदर पॉपुलेशन को रखने के लिए ये फीडबैक सिस्टम जो है ये इस्तेमाल होती है। सो द क्वेश्चन arises, how to understand this positive and negative feedback systems. So this is what we are going to answer, one of the major answer which we are going to get out of today's lecture. ये जो पिक्चर पे आपको प्लांट नज़र आ रहा है, ये प्लांट जो है बड़ा कॉमन प्लांट है, और आपने अमूमन ट्रैवल करते हुए या मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर जो वाटर पॉन्ड्स हैं, जोहड़ हैं, या समटाइम जो हेड वर्क्स हैं, और समटाइम इवन कैनाल्स के अंदर भी आपने ये प्लांट देखा होगा। इसको कहते हैं वाटर हाइसेंथ या सुम्बले आबी जो है इसको, और ये ग्रीन कलर के लॉट ऑफ लीव्स जो हैं वो होते हैं, ये पानी की सरफेस के ऊपर ग्रो करता है, और ये सीजन में ब्लू कलर के फ्लावर जो है वो भी देता है। अब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पाया जाता, ये पूरी दुनिया में ऑल अराउंड इन द वर्ल्ड जो है इसकी पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती है। अब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड के एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे होती है, और जो फीडबैक सिस्टम्स हैं हाउ दे अफेक्ट दिस डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ, वी आर गोइंग टू इमेजिन एन एग्जांपल, एंड विद इन दैट एग्जांपल जो है वो हम लर्न करने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे अफेक्ट करता है। और ये अगर ग्रो कर जाए सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर, तो जो पानी के ऊपर मूवमेंट है, लाइक बोट या के पानी के अंदर ह्यूमन बीइंग का मूव करना किसी चीज काम के लिए या शिकार के लिए, वो नामुमकिन हो जाता है। सो आप इमेजिन करें कि एक इफ देयर इज अ बिग लेक, एक झील है जो कि 10 किलोमीटर डायमीटर के अंदर फैली हुई है, और कैलकुलेशन के मुताबिक उस पूरी लेक को कवर करने के लिए 8 से 10 बिलियन जो ये वाटर हाइसेंथ प्लांट है
ये चाहिए होंगे पूरे साइज को, पूरी जो लेक की सरफेस है उसको कवर करने के लिए। सो टू स्टार्ट विद हम इमेजिन करते हैं कि जो लेक है उसके अंदर कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं करता, और हम फिर उसके अंदर वी ऐड वी इंट्रोड्यूस वन plant onto the lake. For a more clear imagination of plant growth, हम उसको graphical form के अंदर देखते हैं। और ये हाइसेनेट प्लांट्स जो हैं उनकी ग्रोथ है ऑन वर्टिकल एक्सेस जो है, देयर आर नंबर ऑफ प्लांट्स, एंड ऑन हॉरिजेंटल एक्सेस जो है वो डेज हैं या मंथ्स जो है वो है। अब हमने उस लेक के अंदर, जो हमारी इमेजिनेटिव लेक है उसके अंदर हमने एक हाइसेनेट प्लांट जो है वो इंट्रोड्यूस कराया, और व्हाट हैपेंड के एक जब हमने प्लांट इंट्रोड्यूस कराया तो आफ्टर 1 मंथ जो है, 1 महीना गुजरने के बाद ये जो है ये 2 प्लांट हो गए, और उसके बाद फिर 1 महीना गुजरा तो ये 2 से जो है वो 4 प्लांट हो गए, फिर 1 महीना गुजरा तो ये 4 से 8 प्लांट हो गए, और फिर इस तरह चलते चलते जो है वो ये ग्रोथ जो है वो इंक्रीज होती गई, और 1 साल, मंथ आफ्टर और कुछ 24 मंथ्स के बाद जब 2 साल गुजर गए तो ये जो प्लांट है, हाइसेनेट प्लांट जो है, ये कोई 17 मिलियन के करीब जो है वो ग्रो कर गया। अब 17 मिलियन प्लांट जो है वो अगर ग्रो कर गए एक लेक के अंदर, तो कोई बहुत बड़ी चेंज जो है वो नजर नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है कि 7 मिलियन प्लांट जो है वो सिर्फ 0.2% ऑफ दैट लेक जो है उसको कवर करते हैं। सो 0.2% ऑफ द एरिया ऑफ द वाटर जो है उसके ऊपर अगर ग्रीन प्लांट ग्रो कर गए तो नोबडी बॉदर्स अबाउट इट, क्योंकि पानी तो अभी बेतहाशा है, एरिया तो अभी बेतहाशा है। सो आप देखें कि पिछली स्लाइड पे जो हमारा ग्राफ था, उस ग्राफ के मुताबिक आफ्टर पासिंग उसी स्पीड के साथ जो हमने उसमें इनिशियल प्लॉटिंग की, कि 2 साल गुजरने के बाद 17 मिलियन प्लांट्स जो हैं वो उन्होंने लेक के ऊपर ग्रो कर लिया, और जो कि सिर्फ 0.2% एरिया ऑफ वाटर जो है लेक सरफेस को उसको कवर करते थे। लेकिन जस्ट 6 मंथ आफ्टर, यानी कि 24 महीने, 2 साल के अंदर अगर 6 और महीने ऐड करें, पहले 24 महीने लगे हैं 1.7 मिलियन तक पहुंचने पे। अब अगर 6 महीने आफ्टर आप फिगर देखें, यानी कि 30th मंथ के ऊपर अगर आप फिगर देखें, तो 30th month after we put the first single plant, there are 1 billion हाइसेनेट प्लांट्स, और 1 बिलियन हाइसेनेट प्लांट्स जो है वो तकरीबन 13% एरिया ऑफ द लेक जो है उसको कवर कर जाएंगे। अब जब ये सूरत-ए-हाल हुई तो द पीपल हु वर लिविंग अराउंड द लेक दे स्टार्टेड नोटिसिंग कि ये हाइसेनेट की ग्रोथ बढ़ रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि अभी भी इतने इनफ हाइसेनेट प्लांट नहीं थे कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करते फॉर द मूवमेंट ऑफ बोट्स, बट सम पीपल वर वरीड। लेकिन एक दूसरा ग्रुप जो है वो कहता है डोंट वरी, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉन्ग टाइम टू गेट दिस मेनी हाइसेनेट के वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। सो it will be long enough time before they are enough to create a problem. अब सवाल यह है कि which people are right, those who are worried or those who are not worried? Are very few people, and those who are not, they are a lot of them. So we need to imagine कि is the problem a long time in the future, or there will be a problem soon. In fact, with Hysaneth doubling every month, the lake will be completely covered after only 3 more months. So, first, from month 1 to month 30th,
it was only 1.7 million. Then it jumped onto within 6 months to 1 billion. And in another 3 additional months, it's going to hit something like 8 billion और ये पूरी लेक को जो है वो कवर कर जाएंगे. और इनफैक्ट ये जो आपको मैंने इमेजिनरी स्टोरी बताई है, दिस इज अ ट्रू स्टोरी हैपेंड ऑन द ग्लोब. और जो वाटर हाइसेनेथ है, it has become an uncontrollable nuisance in many places. और ईस्ट अफ्रीका के अंदर दुनिया की दूसरी बड़ी जो लेक है, which is known as a Lake Victoria, where the fish from the lake was a major source of animal protein for millions of people, and parts of the Lake Victoria are now presently so badly clogged with water hyacinth that fishing boats cannot move through the water. Or thousands of fishermen जो हैं, they are out of work and the supply of the fish has declined drastically. The water hyacinth story about floating plant on the lake, but it is also about the human population on the planet. So the rapid filling of the lake with these water hyacinth plants, इसमें अगर आप ये जो आपको स्लाइड में नजर आ रहा है, ये दिसंबर 17 दिसंबर 2005 की सैटेलाइट पिक्चर है. एंड हेयर यू कैन सी कि कोई इस पूरी लेक के अंदर आपको कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑफ प्लांट जो है वो नहीं नजर आती. बट अगर लेफ्ट वाली पिक्चर को आप देखें, विच इज जस्ट लाइक आफ्टर 1 year, it's December 2006, you can see this all big growth of this plant on the surface of the lake. So and all these pictures they tells the visual story कि पूरी जो surface है वो cover हो गई, और fishermen जो थे, they were unable, or it was very difficult to row their boats to catch the fish. So ये same story जो है, the rapid filling of lake water with hyacinth after their population become noticeable, is exactly comparable to the exponential population growth that is now filling the planet Earth with humans. Earth की जो carrying capacity है for humans, it's maybe about 8 billion people, and the planet's human population is already 6 billions. So no one knows exactly how many people on the earth can support on a sustainable basis. Its carrying capacity for humans depend upon technology, including the future technology. It also depends on the impact of human activities on the ecosystems. Activities that are for the first time are happening intensively on global scales. Nonetheless, the basic implication of the water hyacinth story for the human population is same whether the Earth's carrying capacity is 6 billion, 8 billion, 10 billion, or even somewhat more. So we need to keep an eye on what is happening on the globe, what we are doing, and what this is going to produce an effect on human living on the globe. So as we have learned, there are two types of feedback systems: positive feedback and the negative feedback. जो वाटर हाइसेनेथ स्टोरी अभी हमने एज एन एग्जांपल देखी, ये बेसिकली एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम की. पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है? सर्कुलर चेन ऑफ इफेक्ट दैट इंक्रीज द चेन. फॉर एग्जांपल कि अगर देयर इज ग्रेटर डिमांड फॉर बाइंग, जब घरों की अगर डिमांड ज़्यादा होगी, इनसे पॉपुलेशन बढ़ती है और घरों की डिमांड ज़्यादा होगी, तो प्राइस जो है वो राइज कर जाएगी. जब
प्राइस राइज करेगी तो डिमांड इंक्रीज करेगी. सो ये एक लूप जो है वो चलती रहेगी हमेशा. मैनी चेंजेस इकोसिस्टम के अंदर जो है दे अपीयर टू बी सडन बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव फीडबैक. When a part of a system increases, another part of the system changes in the way that make the first part increase even more. ये अभी जो हमने एग्जांपल ली कि जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी. सो प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होने की वजह से प्राइस जो है वो बढ़ेगी. सो there is a positive feedback whenever one A has a positive effect on the other B and B has a positive effect on A. So then that is known as positive feedback system. So positive feedback is source of instability. It is a force of change. ये जो exponential growth है is an example of a positive feedback. और एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ तब होती है व्हेन देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ को अगर हम दें तो एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ उस वक्त होती है जब सरप्लस हो, खुराक ज्यादा हो, स्पेस अवेलेबल हो, दूसरे रिसोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हो, तो पॉपुलेशन बढ़नी शुरू होती है. जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी नंबर ऑफ बर्थ जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे. जब नंबर ऑफ बर्थ्स इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी. सो जो वाटर हाइसेनन स्टोरी है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्लोटिंग प्लांट इन अ लेक. This also illustrates that how the exponential growth of human population जो है that happened in recent years. और exponential growth in natural resource use भी जो है उसी तरह ही बढ़ी. जितनी population बढ़ी है उतने ज़्यादा हमने natural resources इस्तेमाल करने शुरू कर दिए. And pollution as well due to industrialization, हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था. और this can suddenly reach the limit of ecosystem to provide the resource and absorb the population. So positive feedback जो है that increase change but it does not always cause an increase. ये जरूरी नहीं है कि ये हमेशा increase ही हो. If a change is in downward, वो already downward direction में है, positive feedback can make the downward change even greater. Or this can happen with the population. For example, when the number of any species like animals in a population जो कि already endangered हैं, जो कम हैं, जिनकी तादाद कम हो रही है, it becomes so small that it is difficult for the animal to uh, find mates or to give more births. So births become fewer and the population decrease. जो decrease होगी population में, it even makes more difficult to sustain the birth rate and the population decreases even more. So positive feedback जो है ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त जो है वो increase ही करे, बल्कि वो decrease कर सकता है. और certain forms में अगर कोई population जो है वो कम हो रही है तो वो उसको instinct उसको खत्म भी कर सकता है. Positive feedback does not happen only in plants or animals or human population. It is common in human social system as well. Mutual stimulation of friendly or antagonistic relationship between individual or groups is an example of a positive feedback system. Undesirable positive feedback जो है that is also known as vicious cycle. और कुछ अर्सा पहले तक मिड और 90s के अंदर there was a cold war between United States and Russia. This cold war during this cold war there was a huge arm race between both the United States and the former Soviet Union. At that time it was known as USSR. So
the relationship between these two with regard to arm race, it provides an example of a positive feedback. When the United States developed more or better weapons, the former Soviet Union was also alarmed और उनको भी फिक्र हुई, so they increased their weapon production. और जैसे जैसे अमेरिकन मिलिट्री स्ट्रेंथ जो है वो बिल्ट हो रही थी, it was stimulated to develop more and better weapons by the Russia. So the United States, alarmed by the increase in Soviet military strength, and developed even more weapons. So positive feedback caused an ascending spiral of weapon in both countries. अगर आप इस ग्राफ को भी देखें, starting from 50s, the production of the weapons as well as increase in the strength of the military of the both, it is going up and up. Or this process reversed when the Cold War ended, and the United States and the Russia, they agreed to fractionally reduce their weapons. और फिर दोनों में ही अगर आप देखें तो एक सर्टेन पीक के बाद दोनों के अंदर एक डिक्लाइन का ट्रेंड जो है वो आता है. So this is a very good common example of the positive feedback where one increase in one system also produce an increase in the other system, or decrease in one system will produce the decrease effect on the other system. There is another very interesting example of positive feedback system that causes one thing to replace the other thing. Back in 80s, VCR जो है वीडियो कैसेट प्लेयर जो है they became very popular, और दो जो है टाइप की कैसेट जो हैं वो इनिशियली मार्केट के अंदर आई. अब उन दोनों का केस अगर कंपेयर करें तो that gave us a very clear understanding that positive feedback can cause one thing to increase and other thing to decrease. When there is a competition between two parts of system, positive feedback cause one part to replace the other. अब इसमें ये जो दो टाइप की कैसेट थी, one were known as VHS and other was known as Betamax. So after some time the VHS जो थी that become popular, और आप कह सकते हैं कि that become the only type of the video cassette types, और the video cassette players जो थे वो मार्केट में रह गए, जबकि जो Betamax थी वो खत्म हो गई. So the victory of VHS video cassettes over Betamax is very good example of this positive feedback. So when these video cassette recorders, VCRs, were first placed on the market, so there were two completely different electronic systems for the VCRs. The systems were VHS and Betamax. They were not compatible. एक की कैसेट जो है वो दूसरे के अंदर, दूसरे सिस्टम के अंदर नहीं इस्तेमाल हो सकती थी. So only VHS tapes could be used on VHS recorders, or only Betamax tapes could be used on Betamax recorders. The public did not knew which system to choose because the cost and the quality of the each was about the same. और as a consequences क्या हुआ कि कुछ लोग जो थे उन्होंने VHS रिकॉर्डर लेने शुरू कर दिए, और जो बाकी के थे कुछ दूसरे थे उन्होंने Betamax रिकॉर्डर लेने शुरू कर दिए. और स्टार्ट के अंदर अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो थी उसके पास VHS रिकॉर्डर थे, और बाकी हाफ जो थी उसके पास Betamax रिकॉर्डर थे. So about half of the movies की जो वीडियो टेप्स अवेलेबल थी मार्केट के अंदर they were VHS tapes, और बाकी जो हाफ थी they were Betamax. अब this situation continued for several years कि आधी VHS के ऊपर आधी Betamax फॉर्मेट के ऊपर जो थी अवेलेबल थी. Then number of VHS recorders and VHS tapes started to grow
exponentially. And the number of Betamax recorders and Betamax tapes declined equally rapidly. मतलब VHS जो थी वो एकदम बढ़नी शुरू हो गई और Betamax जो है एकदम कम होनी शुरू हो गई और अल्टीमेटली ये हुआ कि Betamax जो है वो मार्केट से डिसअपियर हो गई एंड एवरीवन started using only VHS. Why did VHS win the competition? So to understand this, let's look at feedback diagram. Before going into understanding this story, we need to look at this diagram. अब आप ये देखें कि on one side there is VHS VCRs, the VHS players और उनके लिए VHS video tapes, जबकि दूसरी साइड के ऊपर there are Betamax VCRs और उनके लिए Betamax video tapes. अब ये दोनों जो सिस्टम्स हैं इनका आपस में एक फीडबैक सिस्टम है कि VHS VCRs इंक्रीज करते हैं तो VHS वीडियो टेप्स की डिमांड बढ़ जाती है, VHS वीडियो टेप्स जब ज्यादा अवेलेबल होती हैं तो VHS VCR ज्यादा पॉपुलर होते हैं. तो ये एक साइकिल जो है या एक फीडबैक लूप जो है, पॉजिटिव फीडबैक लूप इधर चल रहा है. दूसरे साइड पे अगर आप यहाँ पे देखें तो अगर Betamax VCR जो है वो उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ती है तो Betamax वीडियो टेप की मार्केट भी बढ़ती है, Betamax वीडियो टेप्स ज्यादा होती हैं तो Betamax VCR की मार्केट बढ़ जाती है. लेकिन ये दोनों चूंकि कंपीटिंग सिस्टम थे तो आप ये देखें कि अगर VHS वीडियो टेप्स जो हैं वो बढ़ती हैं तो जो Betamax VCRs हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. सिमिलरली अगर Betamax वीडियो टेप्स बढ़ती हैं तो जो VHS VCRs हैं उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है. और अगर Betamax VCRs बढ़ते हैं तो जो VHS वीडियो टेप्स हैं वो डिक्रीज, उनकी मार्केट डिमांड डिक्रीज करती है. इसी तरह अगर VHS VCRs बढ़ते हैं तो Betamax वीडियो टेप्स जो हैं उनकी मार्केट जो है वो डिक्रीज होती है. अब नाउ व्हाट हैपेंड, चेंज कहां पे स्टार्ट हुई? मेन ये तो दोनों अपने अपने इंडिपेंडेंट, हमने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो VHS सिस्टम्स जो है VCRs और टेप्स यूज कर रही थी और हाफ ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो Betamax सिस्टम जो है वो यूज कर रही थी. The big change started when slightly little bit more than half of the people had VHS VCRs. अब जब थोड़ी सी उनकी तादाद बढ़ी, डिसबैलेंस हुआ, तो जो मूवी कंपनीज थी then they made more videotapes with VHS system because more people had VHS recorders, therefore they bought more VHS tapes. So more people then selected VHS when purchasing a new video recorder, क्योंकि VHS tapes ज्यादा available हैं और ज्यादा movies available उसके ऊपर. As a consequence, there were even more VHS recorders and less Betamax recorders. So the movie companies put even more movies on VHS tapes and less on Betamax tapes. In other words, हम ये कह सकते हैं कि an increase in VHS had a chain effect through the system that caused VHS to increase even more, and decreased Betamax has a chain of effect through the system that caused Betamax to decrease even more. And these were the positive feedback loops that carried VHS to the victory and caused Betamax to disappear. So यहाँ पे दोनों ही lesson we can learn कि अगर सिस्टम जो है वो राइज के ऊपर है या कोई पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो राइज पे है या अफेक्ट राइज के ऊपर है तो पॉजिटिव फीडबैक उसको एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर देगा, और अगर डिक्लाइन के ऊपर है तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम जो है उसको एक्सपोनेंशियली ही जो है वो डिक्रीज कर देगा. Now let's talk about negative feedback. Negative feedback is a circular chain of effect that oppose the change. It keeps things the same. When a part of system changes too much from what it should be,
या जो उसकी एवरेज स्टेट होनी चाहिए, other part of the system changes in the way that reverse the change in the first part. So the function of negative feedback is to keep the part of a system within a limit that are necessary for survival. Negative feedback is a source of stability and it is a force against change. Body temperature की जो एग्जांपल हमने पहले देखी स्टार्ट ऑफ लेक्चर के अंदर, इसमें जिस वक्त बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज होता है, सो हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट हो जाता है, और हीटिंग प्रोसेस एक्टिवेट होने से क्या होता है कि बॉडी में हीट जनरेट होती है और बॉडी की जो रिक्वायर्ड हीट है वो वापस पहुंच जाती है. सिमिलरली अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कूलिंग प्रोसेस शुरू होता है, और वो कूलिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग से टेम्परेचर जो है फिर मेंटेन हो जाता है. सो this is a clear example of a negative feedback in biological system. और इसमें with the help of this system human beings जो हैं वो अपना internal physical और chemical condition को within limits रखते हैं. अब अगर हमारा बॉडी सिस्टम जो है या हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ जाए तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो रिड्यूस करता है बॉडी टेम्परेचर. किससे? बाय रिड्यूसिंग metabolic heat generation से and increasing heat loss from the body. more blood supply जो है वो स्किन को जाती है और उसकी वजह से स्वेटिंग होती है, और स्वेटिंग की वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है और उससे टेम्परेचर जो है वो डाउन हो जाता है. और अगर बॉडी टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजेस बिलो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नेगेटिव फीडबैक इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर बाय इंक्रीजिंग द हीट जनरेशन, शिवरिंग से, and decreasing the heat loss, less blood supply to the skin or less sweating. So keeping the body temperature close to 37 is essential for a human survival. So negative feedback जो है ये जिस तरह बॉडी के अंदर काम करता है, इसी तरह it's common in social system. For example, people use negative feedback to drive car. अगर गाड़ी जो है if the car starts to go off the road से नीचे जाने लगे, तो आप स्टीयर करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में टू ब्रिंग इट बैक. मतलब स्टीयरिंग, आप अगर गाड़ी लेफ्ट रोड पे उतर रही है तो आप स्टीयरिंग को राइट को घुमा के उसको वापस रोड पे लेके आते हैं. और जो ही गाड़ी जो है वो स्किड करना शुरू करती है, वो किसी भी लेफ्ट या राइट ट्रेजेक्टरी को जब मूव करना, डायरेक्शन को मूव करना शुरू करती है, तो नेगेटिव फीडबैक जो है वो इंफॉर्मेशन देती है ड्राइवर को टू रिवर्स द चेंज बाय ब्रिंगिंग द कार बैक. और इस तरह फिर नेगेटिव फीडबैक जो है और भी बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर, सोशल सिस्टम के अंदर, डेली लाइफ के सिस्टम के अंदर यूज हो रही है. लेट्स रिव्यू अनदर स्टोरी, द डियर स्टोरी. The deer story of population regulation. Imagine a forest that has no deer. Then one fine day, one male and one female deer came to that forest. After 1 year, they have two baby fawns. And then a year later, the young deer were old enough to reproduce, and each pair produces two more babies. So the deer population continued to double each year, and after 10 years there were 1000 deers. Definitely deer needs plenty of food to grow and produce offsprings. However, there is not as much food as before because the larger number of deer are eating so much of it. The deer are less healthy, more susceptible to disease, and sometimes they started dying at young age because they do not have enough food. And moreover, a malnourished deer, female deer, may produce only one baby fawn instead of two. So the deer story tells us that the deer are limited by their food supply.
When population increases, the food supply decreases. When population decreases, the food supply increases. When the food supply increases, the birth increase and the death decrease. When the food supply decrease, the birth also decrease and the death increase. And therefore, when population increases, the food supply decreases. The birth rate decreases and the death rate increases. And when the population decreases, the food supply increases. And birth rate increases and death rate decreases. That's why deer are limited by their food supply in that forest. Here is that graphical representation of that story. So when there was abundance in food, there was a lot of plants, the deer population increases. As the population of the deer was increases, the plant, the deer food was decreases because they were eating and they reached some critical point. Now the food is also decreasing and the population is also decreasing. And when the population decreases a lot, there is some relief to the plant growth and they again started increases. And the population of deer also increases. And the same repeated again. It's again goes up and down, and this is how the population is being regulated over the years within any ecosystem. So the story of the deer is story of all plants and animals and human beings. Why do plants and animals have the abundance that they have? And why aren't there more or less? The explanation is population regulation, the natural regulation of population. So population regulation uses negative feedback. As we have learned that as the number of deer were increasing, the number of plants were decreasing. So the population regulation use negative feedback to keep plant and animal population within the limit of the carrying capacity of the environment. What is a carrying capacity? Carrying capacity is the population that the food supply in the environment will support on a long-term sustainable basis. Because the resources that sustain population are limited and no population can exceed the carrying capacity of its environment for a. And finally, every ecosystem and a human social system has numerous positive and negative feedback loops. Both kind of feedbacks are essential for survival. Negative feedback जो है वो stability provide करती है. It keeps important part of a system within a limit required for a proper functioning. जबकि on contrary जो positive feedback है it provides the capacity to change drastically when necessary. The development and growth of all biological systems from cells, individual organization to ecosystem and human social system ये सारे के सारे बेस करते हैं इंटरप्ले ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के ऊपर. Ecosystems and social system can stay more or less the same for long period, but sometimes they change dramatically or rapidly. They function best when they have an appropriate balance between the forces that promote change and the force that provides stability. यानी कि दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए. People constantly interact with these forces of change and stability, or people depend upon negative feedback to take care of things and keep everything functioning smoothly most of the time. और जब भी लोग कोशिश करते हैं to improve their situation, development or solving problem, वो यूज करते हैं positive feedback to help make the changes they want. However,
In addition to working for people, positive and negative feedback can also work against them. Sometimes people try to improve things or solve problem, and no matter what they do, there is no improvement because they are working against negative feedback that prevent the change that they want. Or some other times people refer things to stay the way they are, but positive feedback amplifies seemingly harmless action into changes that they do not want. और अगर हम if we pay attention to the positive and negative feedbacks in our social system and ecosystem, we can use the feedbacks to our advantage instead of struggling against them. In case of an ecosystem, this means fitting our activities with ecosystem to do things nature's way. So nature does most of the work and keep things going. The concrete meaning of doing things nature way will become more apparent in later studies or whatever we are going to do. Thank you.